स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल और बात करेंगे आज सब लोगों के साथ Q3 रिजल्ट L&T, ITC, एक्सिस बैंक, BEL, Maruti Suzuki to post earning next week said that on Thursday, January 29, it's a mix of conglomerates and new tech including ITC and Adani Enterprises, which are set to declare their numbers. The borders of several heavyweights from the FMCG gains to infrastructure behemoths will announce their financial result for the quarter ended December 31, 2025. In the week starting January 26, while banking gained the Kotak Mahindra Bank and cement major UltraTech Cement are set to the report their earnings on Saturday. January 24, the focus is shifting to the final week of the month. The boards of the several heavyweights from the FMCG against to infrastructure behemoths and will announce their financial result for the quarter ended December 31, 2025 in the week starting January 26. दोस्तों आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा है जो Q3 का रिजल्ट के बारे में और Q3 रिजल्ट ने डिक्लेयर कर दिया जो कंपनी है L&T फाइनेंस और ITC एक्सिस बैंक और BEL मारुति सुजुकी तो पोस्ट तो मैंने यार जो कंपनी है और डियर जो Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और आप लोगों ने देखा L&T फाइनेंस ITC एक्सिस बैंक्स BEL मारुति सुजुकी एंड मेनी अदर्स कंपनी आर डिक्लेयर देयर Q3 का रिजल्ट और आप लोगों ने देखा जो द बॉर्डर ऑफ सेवरल heavyweight from the FMCG gains to infrastructure behemoth will announce their financial result for the quarter ended December 31, 2025 in the week starting January 26. While banking gained the Kotak Mahindra Bank and the cement major UltraTech Cement are set to report their earnings on Saturday, January 24. The focus is shifting to the final week of the month. और आप लोगों ने देखा जो Q3 के रिजल्ट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है और आप लोगों ने देखा L&T फाइनेंस और ITC एक्सिस बैंक BEL मारुति सुजुकी और मेनी अदर्स कंपनी का जो रिजल्ट इस बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं आज और आप लोगों ने देखा था बोर्ड ऑफ सेवरल हेवीवेट फ्रॉम द FMCG gain to infrastructure behemoths will announce their financial result for the quarter in December 31, 2025 in the week of starting January 26.